Rashtriya Patrakar Mahasangha (RPM) organized a grand and historic event at the Constitution Club in New Delhi on the occasion of National Press Day. Journalists from 25 states and union territories participated in the program and strongly advocated for recognizing the press as the fourth pillar of the Constitution. The event witnessed thought provoking discussions on pressing issues in journalism, including the rising threats of fake news and paid news. Speakers called upon the central government to address the demands of journalists and take concrete actions to ensure their welfare and safety. Addressing the gathering, Supreme Court senior lawyer advocate Asad Alvi said, 75 years have passed since India attained independence, but no significant steps have been taken to protect journalists' rights and ensure their safety. In a democracy like India, where the press is considered as the fourth pillar, it is imperative to grant it at a proper place in the constitution. Unfortunately, India is currently listed among the most dangerous countries for the journalists. It is high time that Modi government take decisive action to fulfill the demands of journalists and ensure their safety and dignity. Dr. Nobindra Narayan Behera, Honorable MP, Jajpur, Odisha, also extended his support and remarked, for a strong democracy, it is crucial to recognize the press as the fourth pillar. The government must seriously consider the demands of journalists. Journalists are warriors of truth and must continue to fulfill their responsibilities with unwavering commitment. We fully support their cause. K.S. Dhatwalia, retired PIB Principal Director General and a distinguished guest at the event, emphasized the need for the government action and said, journalists have the trust of the people of this country. They must continue their duties with honesty and integrity. The government should take positive steps to address the legitimate demands. Dr. Povitra Mohan Samantarai, National President of the Rashtriya Patrakar Mahasangha, pledged to work at the grassroots level for the journalists' rights. He stated, with collective efforts and cooperation, we will strengthen the movement for journalists across the nation. The program highlighted concerns over the impact of fake news and paid news while reiterating the demand for granting constitutional recognition to the press as the fourth pillar. On this occasion, senior journalists were felicitated and awarded certificates for their contribution towards journalism. Eminent journalists, filmmakers, and actor, educationist, social worker Sri Lalit Garg, Professor Ravi Chaturvedi, Sanjay Ray, and Dr. Indra Ray, Jawahar Jairat, Virendra Saini, and Rita Saini, Sushil Sharma, Jagadish Yadav, Bablu Chakrabarti, Satyanarayan Chaturvedi, Dheeraj Kumar, Surinder Verma, K. Sanjeev, Sri Prakash, C. Ravinder Pradhan, Nigamananda Pruthi, Gagan Biswal, Miss Sabnam Adeni, Shivananda Raut, Pankaj Kumar Mistry, Mahteb Khan Chand, Deepak Sharma, Chandrasekhar Badwe, Parvan Bhoot, B. Srikanth, Hemant Sharma, Dr. Kamal Saxena, actor Brijesh were all felicitated on this occasion. The second session of the program was held at the Press Club of India from 6 p.m. to 10 p.m., where 84 senior journalists shared their views and deliberated on challenges faced by the media fraternity. The speakers warned that if the government fails to act promptly, a large-scale movement would be launched. Rashtra Times Chief Editor Vijay Shankar Chaturvedi and Ishan Times Chief Editor Sanjay Ray were chief guest and chief speaker respectively. All delegates, founder members, life members were felicitated on this occasion. Next day, there was a massive demonstration at the Jantar Mantar, which was addressed by BMS Delhi in charge Devendra Kumar Pandey, C2 General Secretary Anurag Saxena, and many media leaders. Arun Goel, chairman of IFSMN, hailed the event as the most significant in the past 40 years. He said the central government must amend the constitution to formally recognize the press as the fourth pillar. The event saw active participation from journalists across Delhi, UP, West Bengal, Haryana, Bihar, Himachal Pradesh, Chandigarh, Jharkhand, Chhattisgarh, Punjab, Gujarat, Maharashtra, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, and several other states. Many participants emphasized the need for journalists to take their fight to the streets, for the demands are not met. The event concluded with vote of thanks by NMC Deputy President Surinder Verma, who expressed gratitude to all dignitaries and participants for their
presence and support. The evening ended with a dinner invitation extended to all the attendees. Rashtriya Patrakar Mahasangha announced that if the demands of journalists are not addressed, a large-scale protest will be organized at Jantar Mantar. A memorandum of demands has already been submitted to the Prime Minister, urging immediate and decisive action. The historic event was graced by the prominent journalists from across the country, including Sushil Sharma, Virendra Saini, Jagdish Yadav, Sanjay Rai, Dhirendra Jaiswal, Pankaj Mistry, Priyabrata Naik, Pri Srikant Lal, Tahir Ahmed, Deepak Sharma, Manoj Giri, Satyananda Chaturvedi, Pawan Bhuth, Govindaram Ratre, Shanti Gautam, Vikas Sharma, Shivani, K.D. Mishra, Bablu Chakraborty, Burendra Patia, Vikas Sharma, and many other esteemed members of the media fraternity. पवित्र मोहित समंतरे जी, उनका थैंक यू करूँगा, धन्यवाद करूँगा कि 22 स्टेट से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उन सबको एक दूसरे के साथ मिलने का मौका मिल गया और एक दूसरे के साथ संपर्क हुआ और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। इसके साथ ही मैं अपने बारे में कहना चाहता हूँ कि मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ। वहाँ पे मैं PR डिपार्टमेंट देखता हूँ, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद जब 2008 में मैं रिटायर हुआ तो मैं एक चैनल अपना स्टार्ट किया, मेरा 365 और चंडीगढ़ टुडे, और 2 मैं अखबार मैगजीन भी निकाल रहा था, इन्वेस्टर्स अपडेट और कंज्यूमर्स पावर। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा और आगे चला और पत्रकारों से, मीडिया से तो जानकारी थी नहीं, वहाँ मेरा ऑफिस में भी यही काम था, प्रेस नोट बनाने से लेकर प्रेस नोट छपवाने तक। मीडिया संगठनों में आए, बहुत जानकारी मिली, प्रेस नोट्स वगैरह बनते भी थे, भेजते भी थे। लेकिन उसमें जो हमारे अभी भाई साहब ने जो एजेंडा बनाया है बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके में सबसे पहले तो मैं लूँगा सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो बड़े बड़े चैनल हैं, जो बड़े बड़े अखबार हैं, वो आदमी को किसी भी टाइम पे निकाल देते हैं। आपने PTI का सिंपल देखा होगा, जब PTI के आदमी निकाल ले, हम यहाँ पे धरने पे बैठे थे, जब भास्कर में पेज उन्होंने कम किए, भास्कर से रिटेंच कर दिए। और ये कोई मतलब सिस्टम होना चाहिए अगर किसी को निकालना है या किसी को। दूसरा, पत्रकारों के ऊपर जो अटैक होते हैं उसके लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है या जो दूसरा डिपार्टमेंट है, उनको अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और जो क्रिमिनल है, जो अटैक करता है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि पत्रकारिता के ऊपर क्यों अटैक करते हैं। इसके साथ ही 60 साल की उम्र के बाद जो छोटे अखबार हैं वो सारे फ्री हो जाते हैं, पर उनके लिए भी कुछ ना कुछ पेंशन का सिस्टम बनाना चाहिए और जो जॉब में है उनके लिए काम करना चाहिए। हमें कन्स्टिट्यूशन क्लब रे कलु बेहरा एडवोकेट आसाद अली KS दत्तवाला जी और सारे जो दीदी मैंने आसछन तो मुझे धन्यवाद दूँ। मीडिया बंधु मान को धन्यवाद दूँ जे आप आसले मीडिया बंधु मान को सम्मानित करूँ, आमर लाइव फाउंडर मेम्बर्स मान को सम्मानित करूँ। आमर प्रेस क्लब रे संध्यारे गोटे कार्यक्रम अच्छी, आम सब डेलीगेट्स मान सम्मानित करूँ, किसी मीडिया बंधु मान को सम्मानित करूँ, लाइव मेम्बर मान को सम्मानित। काली आम गोटे बड़ कार्यक्रम करूँ, गोटे 22 दफा कार्यक्रम, सांबादिक मान जो बहुत समस्या अच्छी, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल, मीडिया को 4th स्टेट डिक्लेयर करवा, नाम को मात्र 4था स्तंभ आम कहती, सारे जो 22 जो 22 पॉइंट्स को लेकर हम जंतर मंतर में 17 तारीख को एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 10 बजे तक। उसके बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को हम एक मेमोरेंडम देंगे। और फिर आप लोगों को बस मेरा I would like to express my gratitude to all my media friends and my invited guests and my members and delegates. इसीलिए तो हम लोग न्यू दिल्ली बुलो कलिंगो क्रॉनिकल ट्यूब।